Hello my dear students, I am again with you with a new session of art. Today what we will be learning, I will not teach you something to draw. In fact, I will teach you something very different. It will be 4 techniques in oil pastels. अब आप बोलोगे मैम हम तो ऑयल पेस्टल्स बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं. आई नो आप लोग सब छोटी क्लासेस से ऑयल पेस्टल्स यूज़ करो, पर आज मैं आपको ऑयल पेस्टल्स की 4 न्यू टेक्निक्स बताऊंगी. उससे आपका क्या होगा, आपका वर्क विल बी मोर इंटरेस्टिंग और आपको ऑयल पेस्टल्स को यूज़ करने में यू विल एंजॉय यूजिंग ऑयल पेस्टल्स. सो लेट्स बिगिन. Now students, as I have told you that you will be able to learn 4 oil pastel techniques. So one is blending, scumbling, graffito and stippling. And these blending techniques, these will make oil pastels more interesting for you people and more engrossing. You will love to use oil pastels from now onwards by learning these techniques. So let's start with blending. Now blending, we'll be using the colors from the red family, red, orange, yellow. Basically when we are using oil pastels, especially in this blending technique, use small strokes. बहुत बड़े बड़े strokes मत लगाइए, right? This technique is very helpful when you are making a background. Suppose you have made flowers and you want to make the background with the oil pastels. From darker, I have used lighter color, scarlet red बोलते हैं इसको. Now overlapping of the colors is very important in the blending techniques. You will not use the color separately. अब हर कलर को अलग यूज नहीं करेंगे, आप कलर को ओवरलैप करेंगे वन ऑन अनदर. एक कलर को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. Now the next color, the chrome yellow. अब ये ब्लेंडिंग टेक्निक जो है ना, इसमें एक तो है कि आप ऐसे कलर को अप्लाई कर रहे हो और कलर को ब्लेंड करते जा रहे हो. इसको एक तरीका और भी है कि आप इसको आफ्टर द एप्लीकेशन, आफ्टर अप्लाइंग द कलर, आप इसको अपनी फिंगर से ब्लेंड कर दें टू गिव इट अ स्मूथ टेक्सचर लाइक दिस विद द फिंगर्स. और यू कैन इवन यूज अ टिश्यू पेपर. ये आपकी मर्जी है, आपको उसको कितना स्मूथ देना. टिश्यू पेपर से ये होगा कलर थोड़ा सा स्क्रैप ऑफ होगा, थोड़ा सा मेसी होगा, इसीलिए मैंने नीचे न्यूज़पेपर भी रखा. सो एट द एंड ऑफ दिस यू विल बी एबल टू डू स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन कलर टू अनदर. मतलब डार्क कलर से लाइट या फिर लाइट टू डार्क, उसको जो स्मूथ ट्रांजिशन होती है, जैसे ये डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है, यू विल बी एबल टू do this. Now the next technique is scumbling. अच्छा, आप कहोगे स्कम्बलिंग क्या होता है? आपने छोटी क्लासेस में स्क्रिबलिंग की हुई है? ऐसे छोटे बच्चे स्क्रिबल करते हैं with the round lines, curved lines. This is scumbling. मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत क्विक होता है. ये कलर लगाया, इसके बाद हमने नेक्स्ट कलर लगा दिया. इसमें ना
ये होता है कि आपकी जो शीट है, शीट की जो कवरेज है थोड़ी सी क्विक हो जाती है। Then the third color, basically you have to move your color in a round circular motion like this. जैसे हमें ट्री बनाना, आपको समझ नहीं आ रहा ट्री में कैसे स्ट्रोक्स लगाने, तो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे कर्व्ड लाइंस में स्ट्रोक्स दे सकते हो। यू हैव मेड अ स्टिल लाइफ और उसकी आपको बैकग्राउंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव द बैकग्राउंड, so you can use this scumbling technique. See, it is comparatively quicker than the blending with the paper or hand or the color. See? Now this is scumbling, and you will be able to blend colors using curved or curvy lines. It's a very interesting. This is one more technique, Sgraffito. In this technique we do the layering. First of all, we'll apply the light color. You might have done this technique in the junior classes. आपने शायद कभी करी हो छोटी classes में. On the top of this light color, we will put the darker color. This technique is very effective when you are making a grass in a landscape or a small portion of a flower. Over there also you can use this. It's a very, now you can use any tool, any sharp thing. I am using this pencil, see. Basically it's a scratching process. When you buy the color, in the colors you have scratchers also. That is, those scratchers are used in this technique only. See, जितना thick आपका scratch जैसे कर रहे होगा उतनी thick line आएगी. Thin use करोगे, you will get a very thin line. See, it depends आप क्या use कर रहे हो. This type of texture you can use for the backgrounds. It gives a very interesting background. See, it's a very interesting technique. The next technique is stippling. It's again a very different kind of technique. This is also called pointillism. Pointillism is to put points, to put dots. Scarce the dots, मतलब जितने दूर दूर डॉट्स होंगे उतना लाइटर शेड आएगा. डेंस द डॉट, इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स. डेंस द डॉट्स, जितने क्लोज डॉट्स होंगे उतना वो डार्क लगेगा. थोड़ी सी ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, बिकॉज आपने छोटे छोटे डॉट्स देनी है विद द पेस्टल. जितनी क्लोज करते जाएंगे आप अपनी डॉट्स को उतना वो डार्क लगता जाएगा. जितनी दूर डॉट्स, वो दैट पोर्शन विल बिकम लाइट. नाउ नेक्स्ट कलर. इसमें भी बेटा आपको ओवरलैपिंग करनी है. This technique is very useful to make distant objects, like for example you have to make distant trees. दूर के पेड़ बनाने हैं. ये बहुत easy और बहुत simple
कन्वीनियंट वे है टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस टेक्निक से यू कैन मेक अ होल लैंडस्केप, यू कैन मेक अ स्टिल लाइफ। छोटे छोटे पोर्शंस को आप डॉट डॉट्स में बना सकते हो। स्टिपलिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, टीडियस है। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर। नेक्स्ट इज येलो। देखो कितने मेरे डॉट्स दूर होते जा रहे हैं, उसका शेड जो है वो लाइटर होता जा रहा है। Now here again I am using some darker shade. अच्छा, आपको मैं ऑयल पेस्टल्स का टिप पता नहीं, मैंने शायद पहले भी आपको दिया था, छोटा सा टिप। ऑयल पेस्टल्स बहुत आपके गंदे हो जाते हैं, आप कहते हो कि मम्मा पुराने हो गए, वेस्ट हो गए, यू थ्रो देम ऑफ। उनको फेंकना नहीं है। यू टेक अ टिश्यू पेपर और सम ओल्ड क्लॉथ एंड वाइप देम ऑफ। जैसे उसको वाइप करोगे वो बिल्कुल फ्रेश और क्लीन ऑयल पेस्टल्स आपके रेडी टू यूज होंगे। बिकॉज ऑयल पेस्टल्स बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ स्मज होके वो एक ओवरलैप हो जाते हैं उनके कलर्स, क्योंकि ऑयल बेस्ड कलर्स होते हैं। सी, मुझे बहुत मजा आता है करके स्टिपलिंग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। Now dear students, at the end of this session, I hope you all must be very clear with all these 4 techniques. First one was, let's recall, first one was blending, in which we used directly blended with the color itself, or we used tissue or fingers to blend the colors. Then was scumbling. It was smooth scribbling with random curvy strokes. So that was again a very interesting technique. And third one was stippling. Stippling was blending with density of dots. And fourth, the last but not the least, is graffito. That is again a scratching technique in which you will be able to create an illusion of texture in your work of art. So just to give an example, I have made a small things for you people, just 2 things. One is this butterfly. Can you guess I have made this with which technique? Yeah, you are correct. It has been made with sgraffito, the scratching technique. First I applied the lighter the yellow color, then on the top of it I have used the tones of red shades and then scratched that off. I made this in a very simpler way. And another is this fish. Any guess? Yeah, exactly. This is one technique. On the blue portion I have used with scumbling, and the this yellow and orange portion has been done with the blending technique. I used a bit of tissue paper to blend the colors, and the again tail is with the blending. So students, I hope you all are clear with all these techniques and you will be able to apply these oil pastel techniques to experiment in your work of art and execute all these techniques in your piece of art. Okay, bye bye kids for now.